يا طيبة يا طيبة يا دوا العيانة اشتقنا لك والهوى Welcome you once again in another mega guest speaker session. Alhamdulillah, we are blessed to have highly intellectual people of our society with us today. We have with us Sheikh Masood, a bachelor's from Medina University, PhD from Karachi University, and president of IQRA, International Quran Reading Academy. Established in 2010, International Quran Reading Academy aims to provide online Quranic learning, spoken Arabic, along with several other Islamic courses to Muslims in different parts of the world, including Pakistan. They utilize a combination of latest internet and e-learning technologies to deliver matchless courses offering to suit learning needs of individuals in various age groups. There are expert males and female teachers having extensive experience and expertise in teaching Quran online in English, Urdu, Arabic and Farsi. To know more about it, you can visit www.iqraquran.net. With us, the speaker, Abu Fatima Asif Hirani. He has done Associate of Bachelor's in Islamic Sharia from American Inter-Global University in Virginia, USA, and he has done his Master's in Islamic Studies from Karachi University. He is also a lecturer in International Quran Reading Academy in English language. Now I'd like to call our guest, Mr. Asif Hirani, to have a talk with us. Assalamu alaikum. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. Respected President of IQRA and my dear brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. First of all, let me clear you one thing on this topic. What's the topic? So let me clear you one thing to remove your confusion, that this Maulvi Sahib will not going to give you some verses of the Holy Quran to recite day in and day out کہ پھر وہ محبوبہ کے قدموں کے نیچے. لیکن inshallah we will give you a very good advice inshallah and a random counseling so that you can help yourself inshallah. First of all, let us understand why our youth is going away from Islam. First, because we, the people who know Islam, represent them in a very wrong manner. Why? Because ہمارا تصور یہ ہے کہ a person who prays 5 times a day, he is wali, he is مولانا, that's it. اس سے آگے کچھ ہے ہی نہیں. 5 ٹائم نماز میں نمازیں پڑھنا, روزے رکھنا 12 مہینے میں, بس ختم. یہی ہمارے پاس اسلام ہے. And rest of the information, jokes. اب ہمارے جوکس کیسے ہوتے ہیں, ہم کس کو کاپی کرتے ہیں جوکس میں, سب کو معلوم ہے. لافٹر چیلنج کو دیکھ کر ہم نے دوستوں میں اپلائی کرتے ہیں, ہوتا ہے نہیں ہوتا. یہ جوکس ہیں. پھر ہمارے یہاں obviously proper sex education بھی کوئی اور دیتا ہے ہمیں. پھر کیا ہے, پھر ہمارے اسپورٹس ہیں. یہ سب چیزیں ہمیں اسلام سے نہیں پتہ چلتی, گو کہ اسلام نے بتائی ہیں. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم لو. تو ہم ان ساری چیزوں کو اپنے دوستوں سے سیکھتے ہیں, میڈیا سے آج کل سیکھتے ہیں, اور ہم مولوی صاحب سے کیا سیکھتے ہیں, اونلی ہاؤ ٹو پرے. اور یہ ہمیں اسلام سے متنفر کر دیتا ہے, کیونکہ باقی جس میں اٹریکشنس ہیں وہ ہم ظاہر کسی اور چیزوں سے سیکھتے ہیں. تو اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ لو کیوں ہم مولوی صاحب سے نہیں سیکھتے. ہم کہتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, سورہ احزاب کی آیت نمبر 21, کہ indeed there is a best role model for you in the life of Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. تو نماز کے لیے بھی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سکھائیں گے کس طرح پڑھنی ہے, روزہ بھی وہ سکھائیں گے, تو لو بھی وہی سکھائیں گے. ہاں, لیکن لو کا طریقہ وہی ہوگا جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. بالی ووڈ کے ایکٹر کا طریقہ ناٹ ایکسیپٹیبل. انٹروڈکشن میں یہ نیچرل چیز ہے. کوئی کہتا ہے کہ میں لو نہیں کرتا تو بے وقوف ہے یا وہ مریض ہے, پیشنٹ ہے. لو ہر کوئی کرتا ہے. اٹ از نیچرل فار آل آف اس ٹو فال ان اینڈ آؤٹ آف لو, اینڈ اٹ ہیپن آل اراؤنڈ اس. اچھا, لو کے لیے 2 تھیوریز ہیں. ایک تھیوری آپ کے آئے گی ایکسٹریملی کنزرویٹو تھیوری, جس طرح ہم اس کو نام دے سکتے ہیں مولوی تھیوری. مثال کے طور پہ مولانا اینڈ مولوی سم تھنگ ڈفرنٹ. جو ہمارے معاشرے میں مولوی لفظ یوز ہوتا ہے وہ بیسیکلی گالی کے لیے استعمال ہوتا ہے, حالانکہ ایسا کرنا نہیں چاہیے. تو وہ ایک تھیوری کیا ہے, وہ ہے کہ آپ لو از بیڈ, لو برا ہے, اور شادی سے پہلے تو کچھ کرنا جائز ہی نہیں. شادی کے بعد بھی آپ پہلی رات کو دیکھنا جائز ہے بیوی کو, اور بیوی کے لیے شوہر کو. اس سے پہلے دیکھنا جائز ہی نہیں ہے. This is the first theory, you can say conservative theory. And the second is
exactly opposite, very liberal theory. Everything is okay before and after marriage. अच्छा, अब हमें क्या रहना है? हमें moderate रहना है. Neither we have to become extremely conservative nor extremely liberal. We have to be moderate. Maybe after 5 years, these conservative people who say that you are allowed to see your groom or your bride only on the wedding night, maybe after 5 years in Pakistan you get this fatwa that even on the wedding night you are not allowed to see, because you can expect anything in Pakistan. Acha, now however, can you ask your local imam of the masjid, Hazrat, Mufti, Sheikh, Maulvi Sahab, please help me, I am in love? पूछ सकते हैं? क्यों नहीं पूछ सकते हैं? फतवा दे देंगे कि आप कर लो लव, ये फतवा दे देंगे. कुछ लोगों की आवाज़ें वाजिबुल कत्ल का फतवा दे देंगे. आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर वाजिबुल कत्ल का, लेकिन हकीकत में ऐसे ही. अब इमेजिन कंपेनियंस बैठे हुए, अल्लाह के रसूल बैठे हुए, and one of the companion came and asked Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam that, oh Prophet Muhammad, permit me to do zina, to do adultery. Subhanallah. लेकिन ये प्रॉफिट मोहम्मद थे, आम मौलवी साहब नहीं थे, तो उन्होंने दूसरी तरीके से टैकल किया. लेकिन ये बिल्कुल जायज़, आप अपने प्रॉब्लम्स लेके मौलवी साहब के पास जाएंगे नहीं तो कैसे सॉल्व होंगे? तो हमें भी प्रॉब्लम्स लेके किसी मौलवी साहब से मुराद एक ऐसे शख्स जिसके एजुकेशन पे, इस्लामिक एजुकेशन और एक्शन पे हमें ट्रस्ट हो, उसके पास हम जाएं काउंसलिंग के लिए. ये बात हमें सुन्नत से मिलती है. बहरहाल अब आ गए, अब मौलवी साहब बता रहे हैं किससे सबक सीखना है. मौलवी गूगल से सीख सकते हैं. आज ये मौलवी बने हुए. हाँ, शेख मसूद हमें पढ़ाते हुए कहते हैं शेख गूगल. आप जो भी बीएड के बारे में पूछ रहा हूँ या बीएड के बारे में पूछ रहा हूँ, आप जाके टाइप करें, आपके सामने जो भी पेज आएंगे आप उस पर ट्रस्ट कर लेंगे कि ये मदीना यूनिवर्सिटी से पीएचडी है, इनकी बात पर भरोसा सही है. हकीकत में ये जो गूगल की सर्चिंग है, इससे इस्लाम कम से कम हमें नहीं सीखना चाहिए. बाकी जो रिसर्चेस हो अलग चीज है. तो जस्ट लाइक प्रेयर्स, हमें रोल मॉडल लव के लिए भी चाहिए. एक इसमें मिसकॉन्सेप्शन है, वो जरा दूर कर लें. आप में से यहाँ कितने लोग मैरिड हैं? एक हदीस आती है अमर बिन अल-आस रज़ी अल्लाह अन्हु की. He asked the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, which people do you love most? अब मैं, वो जो मैरिड ने हाथ उठाया था, कौन थे भाई? किससे मोहब्बत करते हैं आप जी? अल्लाह से. अच्छा, अब देखें, अल्लाह ताला से मोहब्बत अल्लाह के रसूल से ज्यादा कोई कर सकता है? लेकिन वो क्या कह रहे हैं? He replied, Aisha, his wife, is one of the beloved wife. He was not afraid कि कितने कंपेनियंस बैठे, मैं शर्माऊं. कंपेनियंस को तो कहूं कि अल्लाह से मोहब्बत करता हूं और फिर घर पे जाके बीवी से मोहब्बत करूं. अल्लाह से मोहब्बत है, इसको हम आगे पढ़ेंगे, वो स्पिरिचुअल लव है. वो आपका पैशनेट लव कभी नहीं बन सकता. एंड ऑब्वियसली अल्लाह का लव ऊपर रहेगा, बाकी सारे लव नीचे रहेंगे. लेकिन जब ये बात हो रही है कि whom do you love most, तो इससे मुराद है वो इंसानों का पूछा जा रहा है, क्योंकि अल्लाह का तो ऑब्वियस है. तो ये चीज हमें अफ्रेड नहीं करे कि हम बीवी का अगर कहेंगे सबको, अपने अम्मी अब्बू को के मैं तो अपनी बीवी से मोहब्बत करता हूं, तो क्या कहेंगे? जोरू का गुलाम आ गया, जन मुरीद. और ये अबव टेस्टिमनी जो कि मैं आयशा से मोहब्बत करता हूं, अल्लाह के रसूल ने 50 इयर्स या प्लस की एज थी जब दी. आमतौर पर ऐसे लेक्चर जब दिए जाते हैं और जो एजेड लोग बैठे होते हैं 40 प्लस 50 प्लस, तो वो ये कहते हैं कि लव के बारे में जानना है, हमारे चिल्ड्रंस को सिखाया. हम तो क्या, हमारी एज ही निकल गई है. तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं तो हमें भी मोटिवेट होना चाहिए. लेकिन एक चीज हमें पता चला, एज का कोई फैक्टर नहीं है लव के बारे में सीखने में, सही. लेकिन अगर एक 17 साल के बच्चे को इन्फैचुएशन हो जाए और वो अपने अम्मी अब्बू से जाके कहे कि मैं लव हो गया, कोई सॉल्यूशन लाएं, और एट द सेम टाइम वो एक हाथ में फ्लावर और उसके दूसरे हाथ में एक्सबॉक्स का गेम का रिमोट कंट्रोल हो, प्ले स्टेशन का रिमोट कंट्रोल हो, तो भी समझ में नहीं आएगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लेगा. तो मैनी fail to show proper responsibility when they over occupy their time with video games. वीडियो गेम्स भी खेलनी है, चिल आउट भी करना है दोस्तों के साथ, एट द सेम टाइम शादी भी करनी है. डेट्स के बारे में आगे आएगा, आप बेफिक्र रहें. अच्छा, अब लव के बारे में जानते हैं. लव पहले लिंग्विस्टिकली देखते हैं, नाउन के और वर्ड के हैसियत से देखें तो लव का एक माना होता है डिक्शनरी में ए स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिगार्ड और अफेक्शन. दूसरा सेक्सुअल डिजायर. तीसरा ए फीलिंग ऑफ इंटेंस अफेक्शन विदाउट रिस्ट्रिक्शन. एंड
Even a score of 0, 0 in tennis, we call it love, 15 love, 30 love, and so